Too much time. Please, students, attend your live class. Class 4 student, please attend it. Class 4 student, please attend your on live class. Students, today we will chapter 19. Dear students, today we will read chapter 19. Title of this chapter is Human Resources. And these are some few topics we will read in this chapter. Good morning, Atul. Kanaklata, good morning, beta. Good morning, all of you, good morning. Okay, now let's start. Now, we will read these few topics in this chapter. Topics. First, what are human resources? Second, young population. Third, what is human development? Fourth, problems in our country. Okay, my dear students, we will read these few topics in this chapter. First, what are human resources? Young population. About young population, what is human development problems in our country? So, let's start. And where are the other children? Please, student, join live class. Attend it. Okay, now let's start. Human resources means skilled workers or manpower to produce goods or provide services. Human resources development means putting the manpower to good use by education, training and development. Student, what is the meaning of human resources? What is human resource? You know, human resource is the set of the people who make up the workforce of an organization, business sector, industry, anywhere. Means you can say that human resource is human resources means to provide a skilled workers or the manpower. Skilled workers and the manpower, and this skilled workers and manpower are used to produce the different types of goods, and they also provide different types of services, jobs for the people. This is the meaning of human resources. Human resource means human resource is the set of the people who make up the workforce for an organization or an you can say industry or for the business sector. ह्यूमन रिसोर्स कैसे ह्यूमन रिसोर्स क्या है? शिक्षा कौशल के आधार पर। ह्यूमन रिसोर्स में शिक्षा के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, कौशलता के आधार पर ही हम नेचुरल रिसोर्सेस को यूजफुल थिंग्स में चेंज कर सकते हैं. इट मीन्स resources made by human being. You know,
nature, all the things we get as a raw material. Many things we get from many things we will get as a raw material. We cannot use them directly. These raw materials can be sent into industry, and industry this raw materials convert or change into finished good. But how it is changed into finished good? It is changed into finished good with the help of human being, with the help of human resources. So it is known as a human resources. Human resource क्या है? Human resource का मतलब होता है हमें बहुत सी नेचर के द्वारा या बहुत सी हमें नेचुरल थिंग्स चीज़ें मिलती हैं, नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, लेकिन क्या उसको हम डायरेक्ट वैसे ही यूज़ कर सकते हैं? नहीं। आपको कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी चीज़ है, मे बी कॉटन हुआ, मे बी शुगर केन हुआ, मे बी इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड, मे बी टी लीव्स हुए, यू कैन यूज देम डायरेक्टली? नो, यू कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली। आप उसका सीधा वैसे यूज़ कर दोगे। शुगर केन का ऐसे ही आप चाय बनाना हो तो शुगर केन डाल के बना लोगे। आपको कॉटन है, कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, तो क्या आप कॉटन ही पहन लोगे? नहीं, वी कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली। आप उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसको हम लोग इंडस्ट्री में भेजते हैं जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल से कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में। बट हाउ, कैसे होता है? ये ह्यूमन बीइंग्स के ज्ञान और कुशलता के कारण होता है, यानी मनुष्य के ज्ञान से, शिक्षा से, मनुष्य के ज्ञान से और उसकी कुशलता से जो है इंडस्ट्री में ये चीज़ें जो हैं कन्वर्ट होती हैं फिनिश में। तो इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज एक सेट है जो कि प्रोवाइड करता है स्किल वर्कर्स, कुशल कारीगरों को, मैन पावर को, जो कि नए नए अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सके, साथ ही लोगों के लिए नए नए जॉब्स की व्यवस्था कर सके। It is known as a human resource. Means human resource is the set of people who make up the workforce of an organization, industry or a business sector. It is known as a human resource. Means human resources provide skilled workers or manpower. Human resources means to provide a skilled workers or a manpower to produce goods, or they also provide jobs. It is known as a human resources. यानी शिक्षा और कौशलता के आधार पर, ज्ञान और कुशलता कौशलता के आधार पर ही हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चीज़ हैं, उनको हम लोग यूजफुल थिंग में चेंज करते हैं। यानी जो भी आपके रॉ मटेरियल्स है, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उनको उनसे हम नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, उनसे नई नई चीज़ों का बनाया जाता है, नई नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, और इसी चीज़ को, नई नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, इसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। मीन्स दीज थिंग्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो दे आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि ये मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए इन चीज़ों को क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। द थिंग्स विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द नेचर, इट इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचर हमें चीज़ देती है उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। उसी तरह जो चीज़ें मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि से बनाई जाती है, उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। Human resource development means putting the manpower to good use by education, training and development. India has the largest number of young population in the 25 to 35 years of age categories in the world. Therefore, the biggest asset of our nation is its young population. It is good for the future of the nation because there are more people to work. Most of the other nations are having an aged population who are too old to work and depend on others to take care. India has enough resources like mineral wealth, forest, water resources and good climatic conditions. What we need, our human resources, that is educated and skilled people to convert them into goods and services.
Now human resources development with the help of how human resources will be developed. Human resources they develop with the help of education, they develop with the help of health, they develop with the help of skill. Human resources are developed with the help of what? They have developed with the help of education, with the help of training. They can develop the human resources. Means human resources development is putting the manpower. Human resources development, manpower is used to good use. Manpower, can use the manpower in good use. But how? How they can use the manpower to good use? They can use the manpower with the help of training, with the help of education and development. So, the human resources development with the help of education, health and skill. In this way we can develop the human resources with the help of training, with the help of education and with the help of the skill also. You know, in India 25 to 35 years of people, means in India largest number of young populations are available in our country at the age of 25 to 35. The population of this age people are more than the other country. Means the younger population, you can say the largest number of a young population in India at the age of 25 to 35 of age categories of the young population are present in our country. And you know, the young population is a very good for our country. It is very good for the future. Why? Because they are more people to do a work. But in the other country, in the other nation, the population of aged, you can say that in other nation are having an aged population. In India, young populations are present there, but in the other country, aged populations having an aged population. And you know, aged population, they are too old. And they are they are depend to others to do a work. Means they are not good for future because they are too old and they are depend to others to do a work. And in India, there are different type of resources are found in our country, like mineral resource, water resources, forest resources. Means different type of resources are found in our country. So different type of resources we found in our country. And you know, why do we need the human resources? We need the human resources. Our human resources are need to education, skill people, to change them, to convert them or to change them into goods and services. Human resources का डेवलपमेंट कैसे होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मीन्स होता है कि मैन पावर, जो वी कैन पुट द मैन पावर टू गुड यूज. जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है जो मैन पावर है उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए. लेकिन कैसे उसका अच्छा इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? एजुकेशन से कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे के उनका कर सकते हैं, शिक्षा दे के कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे के कर सकते हैं, ज्ञान दे के कर सकते हैं. तो भारत में क्या है? भारत में जो है यंगर पॉपुलेशन बहुत अधिक है, यानी 25 to 35 एज के लोग हमारे देश में बहुत अधिक है. इनकी संख्या जो है अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में बहुत अधिक है. तो ये क्या, ये फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत अच्छे हैं. क्यों? क्योंकि ये जो भी काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक हैं और किसी भी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं. लेकिन वहीं कई देश ऐसे हैं जहाँ पे एजेड पॉपुलेशन की संख्या अधिक है और इनकी संख्या बहुत अधिक है,
तो ये क्या है, ये काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बूढ़े होते हैं, ये बूढ़े होते हैं तो भविष्य में क्या होगा, इन फ्यूचर दे आर डिपेंड ऑन अदर्स टू डू वर्क। ये भविष्य में जो है बूढ़े लोग होते हैं, तो ये बूढ़े लोग भाई आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी काम कर नहीं पाएंगे, तो ये क्या होता है, काम के लिए जो है दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अपने काम को कंप्लीट कराने के लिए ये दूसरों पर निर्भर। भारत में बहुत से तरह के रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज है, वेल्थ फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज, बहुत भी डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। Problem faced by India in the development of human resources. You know, India faced some problem. India faced some problem in the development of human resources. India faced some problems in the development of human resources. Which type of problem is faced by the India in the development of human resources? The different type of problem they have faced in the development of human resources. Now, first is literacy. The Census of India 2011 shows that literacy rate of India is 74.04%. It consists of male literacy rate 82.14% and female literacy rate 65.46%. It needs to grow at much faster rate if we have to create employment opportunity for the growing young population. Now, the first problem which is faced by the human resource, the first problem which is faced by the India in the development of the human resource is your literacy. You know, according to the 2011, it shows that the literacy rate of India, is 74.04%, and it's include male literacy rate 82.14% and women literacy rate is 65.46%. Male 82.14% and female 65.46%. So, you know, this one is shows according to 2011 it shows that the literacy rate of India, literacy rate in India is 74.04% and included means in literacy included male 82.14 and female they are 65.46%, and they need to grow at much faster rate. So we have to develop what? We have to development employment opportunities. We have to develop employment opportunities to the growing young population. So literacy, this one is the first problem which is faced by the India to develop the human resources. According to 2011 जो था उसके अनुसार भारत में जो लिटरेसी की संख्या थी वो 74.04% थी, जिसके अंदर इंक्लूड थे आपके मेन और फीमेल दोनों। मेन 82.14% एंड फीमेल 65.46%। तो इसमें और भी अच्छे से और भी ग्रो करने के लिए और तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए जो था इनके लिए नई जो आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नई जो भी इनके लिए जॉब हो, नए इनके लिए काम धंधों की व्यवस्था की जाए। जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, जो धीरे धीरे ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन है, धीरे धीरे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए नौकरियों की उचित व्यवस्था की जाए। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम which is faced in India to develop the human resources. Now second, lack of higher education. Facilities providing higher education will help in providing skilled jobs in the population also. Now second is a lack of higher education. Government
also face some other type of problem. Government also, you can say, they also face the facility. They can provide the facilities to the student for the higher education. They can provide facilities for the higher education, and they also help him to provide the skilled jobs to the population. इसमें क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को, पढ़ाई के लिए नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में नई नई व्यवस्था हो रही, नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ उनके लिए स्किल जॉब की भी व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था तो हो रही है, नई नई एजुकेशन की व्यवस्था हो रही है, उसमें जो भी फैसिलिटीज़ हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी सुविधाएँ देनी है वो सब प्रोवाइड हो रही है, वो सब प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन उसमें कहीं जॉब की व्यवस्था नहीं है। तो इसके साथ ही साथ उनके लिए नए नए जॉबों की, नए नए नौकरियों की भी व्यवस्था की जाए। Insufficient vocational training. There is a further need to focus on improving the skill of its young population through vocational education so that they can get job. The next problem which is faced by the India to development of the human resources, insufficient vocational training. The government also focus on the improving. The government also focus in the improving of the skill of its young population. The government also focus on the improving the skills of the young population, and if they can provide them, they can provide them vocational training. If they can take the vocational training, the young population, they can take the vocational training, so they can get job. So government also provide them the vocational education. They can also provide the vocational education to the young population, and when the young population, they can take the vocational training, vocational education, so they can get jobs very easily. So this one is also the main problem in India, which is faced by India to development of the human resources. Next is the overpopulation. You know, India is an overpopulated country, causing a serious shortage of food, housing, shelter and health care. Smaller families can give better education and health care to their children. You know, India is a very big country, and India is the second largest country in the world also. So overpopulation is also the main problem. Overpopulation is also the main problem faced by India in the development of the human resources, because at the overpopulation there are so many shortage of many things. Government cannot provide everything for the everyone, like the shortage of food, housing, shelter, healthcare. All these type of facilities are not provided by the government to the everyone. Why? What is the reason? The reason is overpopulation. The main reason is overpopulation. So the government cannot provide everything for every person. They cannot provide food for everyone. They cannot provide housing, shelter or the healthcare facility to the everyone. So overpopulation is also the main reason. And you know, smaller family is much better than the large family. Why? Because the small family give better education and healthcare to their children. But the large family, they cannot give the better education and healthcare, any kind of facilities to their children. So the smaller family is much better than the large family. ओवरपॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या भी सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि भारत की जनसंख्या, भारत जो है वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण सबको
हर सुविधाएं नहीं मिल पाती, सबके लिए खाने की व्यवस्था देश में नहीं हो पाती, सबके पास घर नहीं है, सबके पास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। कारण क्या है? कारण जनसंख्या का अधिक होना। पॉपुलेशन अधिक है, जनसंख्या अधिक है, तो भाई सबके पास तो गवर्नमेंट के पास सबके पास पहुंचाना तो पॉसिबल नहीं होता है। ये जनसंख्या कम होती तो हर सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलती, लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, इसीलिए भारत को वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे माना जाता है, जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या। मीन्स इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यू कैन से दैट इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। एंड चाइना इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और चाइना जो है फर्स्ट नंबर। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण, ओवर पॉपुलेशन होने के कारण क्या होती है? हर सुविधाएं हर व्यक्ति को नहीं मिल पाती, सबको घर नहीं मिल पाता, सबको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाते, बीमार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इस तरह की चीज़ों की शॉर्टेज होती है, इस तरह की चीज़ों की कमी पड़ जाती है। इसके अलावा जो छोटी फैमिलीज होती है, छोटी फैमिलीज जो होती हैं वो बड़ी फैमिली से अच्छी होती है। छोटी फैमिली में क्या? छोटी फैमिली में रहने वाले लोग अपने बच्चों को हर फैसिलिटीज़, हर सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था हो या उनके स्वास्थ्य के लेकर कोई व्यवस्था करनी हो, तो वो बड़ी फैमिली की तुलना में छोटी फैमिली में आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि उनके बच्चे कम होते हैं, एक या दो, तो वो अपने बच्चों को हर सुख सुविधाएँ जो देनी चाहिए वो बहुत ईजीली उनके लिए जो है उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन वही जो बड़ी फैमिली होती है, भाई उसमें बहुत से बच्चे, तो बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर, उसमें फैमिली मेम्बर्स बहुत अधिक होते हैं, तो चिल्ड्रंस भी बहुत अधिक होंगे। चिल्ड्रन अधिक होंगे तो अब हर बच्चों के लिए हर चीज़ें तो उपलब्ध हो नहीं पाएंगी। इसीलिए जो छोटी फैमिली होती है वो बड़ी फैमिली से ज़्यादा अच्छी होती है। तो छोटी फैमिली में रहने वाले लोग अपने बच्चों के लिए हर सुख सुविधाएँ, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर की हो, हर फैसिलिटीज़ जो है अच्छे से प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन जो बड़ी फैमिली होती है वो हर सुविधाएं अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाती। सो द स्मॉलर फैमिली इज मच बेटर देन द लार्ज फैमिली, बिकॉज द स्मॉल फैमिली प्रोवाइड एवरीथिंग, मीन्स दे कैन प्रोवाइड द एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू देयर चिल्ड्रन वेरी इजीली, बट द लार्जर फैमिली दे कैन provide all these type of facilities for their children. So the smaller family is much better than the large family. Non-working female population. Most of the female population of India even today either do household work or help the male folks in the agricultural sector. With the proper literacy and training, they can take up highly skilled jobs. You know, in our country, mostly women are working in their home only. Means only few numbers of women are working outside of their home. But large number of women, you can say most of the women are working only in their home. So it is also the main problem. They are also the main problem, and this is the main problem with the proper literacy, and training. If they also take the education, they also take a training, so the women also get the different type of jobs according to their skill. But the other main problem is non-working female population in India. अगला नॉन पॉपुलेशन वर्किंग फीमेल, हमारे यहाँ क्या होती है, औरतें ज़्यादातर घर में ही काम करती हैं, या गांव की जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड के संग खेतों में काम करती हैं। बहुत कम लोग हैं जो औरतें हैं जो बाहर जॉब करती हैं, ज़्यादातर वो अपने घरों में ही काम करती हैं। तो उनके लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, उनके लिए भी ट्रेनिंग, उनको जिस चीज़ में जिस काम को करने की उनकी इच्छा उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। इससे क्या होगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो करना चाहती हैं उसके अनुसार उनको नौकरी मिल सकती है।
So the non-working female population, it is also the main problem in India to face in the development of the human resources. Lack of sufficient health care in rural area. People in rural area do not have access to hospital and doctor. It affects the working capabilities of the population also. You know, India is a very big country, and out of 100, 70% people live in village. They live in village, they work in village only. And in village area, rural area, they do not have approach. In rural area, hospital, doctor, these type of facilities are not available there. These type of facilities are not available there. So it is also a fact. It is also affect on the working capabilities of the population. It is also affect on the working capabilities of the people who live in the village. गांव में क्या होता है, आप सभी जानते हो, भारत में 100 में से 70 लोग जो थे गांव में रहते हैं और गांव में खेती बाड़ी करते हैं। तो गांव में क्या होता है, गांव में ज़्यादा हॉस्पिटल या अच्छे हॉस्पिटल या डॉक्टर के मतलब बढ़िया डॉक्टर और हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती है। तो गांव में जो लोग होते हैं बीमार पड़ जाते हैं तो उनको अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज नहीं हो पाता जल्दी, या हॉस्पिटल अच्छे बड़े हॉस्पिटलों वाली सुविधाएं जो हैं उनको गांव में नहीं मिल पाती। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव जो है उनकी सेहत पे पड़ता है। सेहत पे पड़ने के कारण क्या होता है, बीमार हो जाते हैं, वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते। कारण क्या होता है, क्योंकि अगर वो बीमार हैं तो उनको अच्छी सी फैसिलिटीज़ जो है हेल्थ केयर जो है नहीं मिल पाती है, अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज नहीं हो पाती, अच्छी दवाइयाँ उनको समय पे नहीं मिल पाती, तो इसका इफेक्ट भी पड़ता है। नाउ द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट. Now here some major steps are also taken by the government to develop the human resources. First, right to education has become a law. Each child up to 14 years of age will now have access to education. Free education programs have been introduced in villages and towns. Now, our government also taken some major steps to improve the development of the human resources, like your right to education. Our government, now right to education. Right to education means child up to 14 years of age will have to approach education. These type of facilities are given by the government in our country. Our government provide the free education in the villages up to 14 years of age of children. They can provide the free education for the children who live in the villages. Not only the free education means everything. In education, everything is free. They cannot pay the fees. Their school bags are also provided by the government. Food is also provided by the government. Uniform is also provided by the government. Everything is provided by the government to the children. Means totally free education. This law means right to education has become a law. The government has become a law to right to education. Means they can provide the free education. They can provide the free education in the village. The children who live in the village, the government provide the free education. Up to 14 years of age will have to approach to education, free education. And this type of program has been introduced by the government in the village and town area. So government established many primary schools. Why? To give the free education to the children who live in the small villages and town areas. हमारी गवर्नमेंट ने कुछ आप कह सकते स्टेप उठाए हैं, हमारी गवर्नमेंट कुछ
नए नए तरीके अपनाए हैं ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारे देश की जो कुछ हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नए नए फैसिलिटीज़ और सुविधाएं हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराएं, जिसमें से आपका राइट टू एजुकेशन हैज बिकम अ लॉ। हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक लॉ बनाया जिसमें गांव में रहने वाले बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की। गांव में प्राइमरी स्कूल होता है तो हमारी गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि वहाँ पे पढ़ने वाले हर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था हो। मीन्स उन्हें हर चीज़ फ्री हो, उन्हें इसके लिए कोई फीस ना देना पड़े, उनके लिए स्कूल बैग की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है, ड्रेस की व्यवस्था की है। मीन्स 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है। हमारी गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था की है और ये सब चीज़ें वहाँ कहाँ छोटे छोटे गाँवों और शहरों में इन्होंने इसकी व्यवस्था की है कि वहाँ पे रहने वाले बच्चों के लिए जो है वो फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है ताकि वो पढ़ सके। Now the importance is being given to education of girls so that they can get job. Our government also, they can also give the facilities to the children also. They can also establish the different types of colleges and schools in the village and town area for the girls only. Why? Because the girls also get the knowledge, they also get the education, and if girls they can get the education so that they can get job. So our government also provide education for the girls. हमारी सरकार ने लड़कियों के पढ़ने की भी व्यवस्था की है। हमारी सरकार ये चाहती है कि लड़कियां भी पढ़े, अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो क्या होगा, वो भी नई नई नौकरियां कर सकेंगी, वो भी नए नए जॉब पा सकेंगी। तो लड़कियों के पढ़ने के लिए भी स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था जो है हमारी गवर्नमेंट ने जगह जगह पे किया है। गवर्नमेंट इज ओपनिंग मोर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू मेक द पीपल मोर स्किल्ड। Except these, our government also opened many training centers, and these training centers make the people more trained. This training center make the people more trained. So our government also opened many training center for the people in our country, and this training center give the training to the people and make them more trained. हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स की भी स्थापना की है जहाँ पे लोगों को हर क्षेत्र की मतलब हर काम की ट्रेनिंग दी है। जो काम उनको पसंद आता है, जो काम उनको अच्छा लगता है करने के लिए, उससे संबंधित सेंटर पे जाके वो उस चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं, उस चीज़ की शिक्षा ले सकते हैं। और अगर वो उस चीज़ के बारे में जानेंगे, उस चीज़ की शिक्षा लेंगे, उस चीज़ का उनको ज्ञान होगा तो उस चीज़ को वो और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सो आवर गवर्नमेंट ओपन मेनी ट्रेनिंग सेंटर इन एवरी you can say every village, town and cities, and in this training center people get more training. They can give a training and they make the people more trained. More school and colleges are being set up at district and state level. Our government also opened many school and colleges in the district and the state level also. हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, और भी बहुत से स्कूल और कॉलेजों की भी स्थापना की हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, स्टेट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में उसने नए नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की है। क्यों? ताकि आसपास वहाँ पे रहने वाले बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा ज्ञान मिल सके। ट्रेनिंग सेंटर्स की व्यवस्था की है ताकि बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग उन्हें आसानी से मिल सके। So our government opened many schools and colleges in every district. More employment opportunities in villages and towns are being created to discourage migration of people to the cities. Now our government also provide many employment opportunities in the village and town area. Why? Because they open, you can say that because they can do these type of thing. Why? Because
they can give the opportunity, employment opportunity to the people, so they cannot move from village to the town area, because in these time, in the present time, many peoples are moved from village to the city area. Why? For the job only. For the job, they can move from the village to the city area. So our government provide many employment opportunities in the village and town area. Why? If the government provide the job to the people, so they cannot move from the village to the town area or city area. हमारी सरकार ने बहुत से काम धंधों की व्यवस्था गांव में ही की है, टाउन एरिया में ही की है, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोग अपने गांव या कस्बों को छोड़ के शहर की तरफ ना जाए, क्योंकि लोग काम धंधे की तलाश में ही तो शहर को, गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं। तो हमारे सरकार ने क्या किया, गांव में ही काम की व्यवस्था की है, काम की व्यवस्था की गई, लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था की, ताकि वो लोग गाँव में ही रहें, उस काम को करें और उनको पैसे कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ ना जाना पड़े। न्यू हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर यूनिट्स आर बीइंग सेट अप इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विस। आवर गवर्नमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश मेनी हॉस्पिटल्स, different hospitals and healthcare facilities in the rural area and the town area, and they can provide these hospitals and healthcare centers are provide better health services to the people who live in the village and town area. हमारी गवर्नमेंट ने गांव में, कस्बों में अच्छी सुख सुविधाओं से भरी हुई अस्पतालों की व्यवस्था की है, डॉक्टरों की व्यवस्था की है, ताकि गांव में, कस्बों में रहने वाले लोगों को जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उन्हें अच्छे से उपलब्ध कराई जा सके। सो दीज टाइप ऑफ मेजर स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू improve the problems in the development of the human resources. What is a human resource development? Human resource development means putting the manpower to good use, putting the manpower to good use by education, training and development. And what is the human resources? Human resources means to provide a skilled workers, to produce goods or provide a service. This is the meaning of human resources. Human resources is a set of the people who make up the workforce of an organization, industry और बिजनेस सेक्टर। ये शिक्षा कौशल के आधार पर ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। थैंक यू। बोले सर क्लास पे